उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that ठीक है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। सीधी सीधी बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे उनके तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातों को डिनाई करा। हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ आप ये भी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया। जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि well तो इन द फर्स्ट प्लेस एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नो मिसकंडक्ट, बट इन केस ये तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे। जी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन्ड ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग इज इंक्वायरी इन केस द एसजेसी वांट्स टू कंटिन्यू। नहीं, ओपन का क्या मतलब? ओपन मीन्स इन ओपन कोर्ट। मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने जाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं, वो खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था इन अनदर केस, दिस इज पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 538। इस पर 5 जजेस बेंच ने ये फैसला, क्योंकि इन एन अर्लियर मैटर आई मेड एन एप्लीकेशन दैट लेट दिस केसेस बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president and president removed me. So therefore main case hinges on this question whether any person। ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज दिस काउंसिल देयर। आप उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग। नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट। On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold inquiry, तो फिर let that be in the open court। आपकी तकरीर का एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ, ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या उस ओथ आए डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं,
उसका चाहिए था, इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शो कॉज नोटिस हमें दिया गया, हमने उसकी 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या, जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू प्रोसीड फर्दर अंडर द 2005 रूल्स दैट हैव बीन फ्रेम्ड। नहीं, दे आर नॉट रूल्स, दे आर प्रोसीजर। Procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then प्रोसीडिंग्स क्या होनी है, डिटेल बता दें क्या प्रोसीजर होनी है। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब। आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत किया। जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये ठीक है, बहुत बुनियादी सी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब आप मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा, आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं किया, बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी भी नहीं आप जनरल बात, आप बात करें उधर, जनरल बात हो रही है। लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड है, भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ना। तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात, आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन को तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं। अभी सवाल कुछ और है। अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना जी। तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू गौर नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे, बल्कि इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माइलॉर्ड की बातों में वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की। आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं। हम अगर कोई डिसीजन देंगे वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम योर, अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हम इस पे से इन्फ्लुएंस होके करेंगे आपके फेवर में, अगर नहीं होंगे तो अलग बात है। तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस। ठीक, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। सपोज हम, आप ये ना समझे, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है, वही शख्स जिनके खिलाफ आपने एलिगेशन लगाया, कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर तो हम बदनाम हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलतियों पे प्रेशर था।
application for making them party. तो आप अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया, इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but Rightfully so. The head of the organization should also was it क्या कहते हैं, discretion is the better part of valor, that you did not. Absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे? Individual. हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him, lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody, it will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality, they can't be good or bad, they are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations, we'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को. Leave within a week, sir. हाँ? नहीं, अगर आप देखें आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना. ना छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली, तो ऑफिस तो ओपन है. नहीं, ऑफिस देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा. जी हम उनको फिर नोटिस करेंगे. अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं. We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है. Otherwise, if your lordship would entertain. जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें. कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब. नहीं सर, हमारे से नहीं कैन डू इट. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें. 3rd week of January रख लें सर. पता मालूम करना है. देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. Okay? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Yes, sir. Then, no, 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it in. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये भी आपने देखना, इट्स वेरी सीरियस. रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं, देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. Bundles Jazz World Pay with Jazz Super 4G.
with Carrier. दूध के बादल में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बनाए हमको। हम और ग्लूकोमिल के साथ बढ़ो, हम और ग्लूकोमिल के साथ बढ़ो। Shine with sparks. ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। हैप्पीनेस लिव्स हियर। As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. कल कर लेंगे. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then it's already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखें. टाइम पे कर दो. 11 जुलाई. कितने बजे? ठीक. 11 के बजे. ठीक है. इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under 3 constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other 2 petitions,
also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में I'll Federation is already there. address on that point also. उसे concise. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। आज की समाअत में वकील हामिद खान को तफसील से सुना गया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी केस की बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है। Stop. To come up tomorrow at 10:30 because my lord is also here. There's another bench. Is 11. ठीक है? Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi. चलिए.